Good morning, students. In last period, we have completed our 2.3 exercise in chapter number 2, fractions and decimal number. Today, what we are going to study, the next topic of the chapter, that is multiplication of a decimal number with a whole number. That means डेसिमल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, कोई भी होल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है. So without wasting the time, we will see the first example. What has been given to us? 2.7, a decimal number, and with what we have to multiply? 8, and 8 is a what? It is a whole number. So decimal number multiply with a what? With a whole number. So we will start the multiplication. So only a single number is there, so we will multiply directly. First we will multiply 8 with what? 7. So 8 7s are how much? 56. Carry 5. 8 2s are 16. 16 plus 5, 21. So what we got as an answer? 260. Now over here you see students, after decimal हमें कितनी digits हैं? तो after decimal 1 digit is there in the question. So answer में भी हमें क्या करना है? एक digit skip करना है, moving from back side to front side. So after 6, what I will do? I will place a decimal. अगर question में डेसिमल के बाद एक नंबर है तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर आना चाहिए. अगर डेसिमल के बाद दो नंबर है क्वेश्चन में तो आंसर में भी डेसिमल के बाद दो डिजिट्स होनी चाहिए. चलो, now we will see the second example. Over here, after decimal you see students, how many digits are given? 2 digits are given. So now this is our decimal number and this is our whole number. So now we will multiply the whole number with what? Decimal number. So first digit of a whole number is what? 1. So before multiplying by 1, what is there after 1? One digit is there and that is 2. So for this 2, what I will place? 1 0 first, and then we will start the multiplication. So 1 multiplied by 7, 7. 1 multiplied by 2, 2. 1 multiplied by 3, 3. Anyone left to multiply with 1? No one. So now skip 1 and we will go with 2. So 2 7s are 14. Carry 1. 2 2s are 4 plus 1, 5. 2 3s are 6. Add 0 plus 4, 4. 7 plus 5, 12. Carry 1. 6 plus 2, 8. 8 plus 1, 9. 3 plus nothing, 3. So this we got as a product of 3.27 multiplied 12. But still decimal is too left to place. So where we will place the decimal in the answer? So see the question. Question में decimal के बाद कितने digits हैं? 2 digits हैं. तो आंसर में भी decimal के बाद कितने digits आनी चाहिए? 2 digits. So moving from back side to front side, how many digits we will skip? 2 digits हम skip करेंगे. So 1 2, and where will be the decimal between 9 and 2? So in this way students, we have to multiply a decimal number with a whole number. मल्टीप्लिकेशन में कुछ करना नहीं है, जैसे आज तक हम मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है. बट खाली ध्यान क्या रखना है कि आंसर में हमें डेसिमल कहाँ रखना है. अगर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए. अगर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आंसर में भी 2 डिजिट्स होनी चाहिए. ओके.